Morning, kids. We are going to discuss about the JEE Mains previous year questions. So we'll start with the alternating current. Alternating current is a very small chapter where every year one question, and that is simple formula based. So, and I request every student, like, there are some 6 or 7 formulas are there, and effectively it will take just 1 hour to revise this chapter. Please do revise. Listen first all the theory, understand all the concepts. 7 or around 10 formulas are there. Daily for 5 or 2 minutes, revise them. Practice few previous year questions, some around 20, 30. That'll be sufficient. Definitely you can manage any question coming from this. So we'll start with the, let me discuss, and as we proceed, I will give the proper guidance rather than simply giving guidance may not help you. As and when the question comes, what method, how to prepare a given chapter, I'll be helping you. Please do say this. So this complete series I'm going to complete. Every chapter, the previous means will be uploaded. Parallelly, guidance will be given. Okay, now first we'll start with the alternating current, JEE Mains previous year 22 April shift. Okay, there's a one question I picked up. There are two statements are there. An AC circuit undergoes electrical resonance if it contains either a capacitor or an inductor. First, we'll check the statement one is right or wrong. So we know, like, this is the basic diagram for electrical resonance. So there must be a resistor, capacitor, and inductor, and an AC source. So this is C, L, R, and this is the frequency. And the resonant frequency of this circuit depends on 1 by 2 pi under root of LC. Okay, agree with this. This will be your resonant frequency. Then look at this. The resonant frequency depends on what all? Resonant frequency depends on L as well as C, no? L as well as C. I'll write it clearly. It depends both on L and C. Both must be there. Capacitor should be there and inductor should be there. Then only it can be resonant. But it's telling either. Either means या capacitor नहीं तो inductor. कौन सा भी रहे तो resonance. No, it's not like that. दोनों चाहिए यहाँ पे. Inductor, capacitor दोनों रहे तो then उसको resonance बोलते हैं हम. Okay, little bit Hindi I know. I'll try to manage it. तो electrical resonance के लिए इंडक्टर कैपेसिटर बोथ रहना चाहिए सर्किट में. अगर कोई एक रहे तो इट्स नॉट एन resonance. It will become RC circuit, RL circuit. Then it will not become resonance. Fine. So this statement one is wrong. Sir, what is actually resonance? Resonance में क्या होता है? Resonance, what will happen? There will be a transfer of energy from the source to the load. When the frequency of source, there will be a transfer of energy from source to the load. When the frequency of the source becomes equal to resonant frequency of the circuit. In a very simple, at resonance, energy transfer source से circuit को ज्यादा पहुंचता है. Maximum transfer of energy occurs. कहाँ से? From source. So what is the source? We will supply it. So this will supply energy. Supplies energy. What about resistor? Accepts energy. So what do you mean by resonance? Transfer of energy from source to the circuit. जब resonance हो रहा है बोले तो क्या होता है कि यहाँ से energy maximum transfer circuit को हो जाता है. That particular phenomena will call resonance. Okay, fine. उसके लिए capacitor और inductor दोनों रहना जरूरी है. Fine. Okay, no. So therefore, the statement one is wrong. Then statement two.
An AC circuit containing a pure capacitor, pure inductor, consumes I power due to its non-zero power factor. AC circuit containing pure inductor, pure capacitor. What mean by pure? शुद्ध शुद्ध बोलते हैं ना. मीन्स उसमें ओनली कैपेसिटर, कुछ रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं, अगर नहीं रहे तो उसको विल से प्योर. दिस इज सोर्स एंड दिस इज कैपेसिटर. यहाँ पे रेजिस्टर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ओनली कैपेसिटेंस. एंड नेक्स्ट इंडक्टर. So then it's telling high power. High power means ज्यादा power consume होता है. It's very simple. Who will consume power? Only resistor will consume power. This is a basic idea. You write it clearly in AC circuit. I'll write this basic instruction. In AC circuit, only resistor consumes power. Resistor is the only one which will consume power. What about capacitor? Capacitor क्या है कि like it will accept energy and will return back. Inductor also will accept energy, will return back. It will not consume power. Capacitor will not consume power. Inductor will not consume power. Consume अलग है यहाँ पे. कैपेसिटर क्या करता है कि यहां से एनर्जी ले लेता है फॉर क्वार्टर साइकिल. अगेन क्वार्टर साइकिल में एनर्जी रिटर्न करता है. अगेन नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल इट विल यहां से ले लेता है सोर्स से, और ए रिटर्न दे देता है. व्हाट इज द नेट एक्सेप्ट किया कैपेसिटर मींस नेट एनर्जी टेकन बाय कैपेसिटर. कैपेसिटर कितना ले लिया? जीरो. सिमिलरली इंडक्टर सोर्स से एनर्जी ले लेता है, फिर रिटर्न दे देता है. अगेन इंडक्टर अगेन इट विल टेक इन वन साइकिल, अगेन विल रिटर्न बैक. दो बार एक्सचेंज होता है एनर्जी बिटवीन कैपेसिटर सोर्स, बिटवीन इंडक्टर एंड सोर्स. सो नेट क्या हुआ? सो इट्स वेरी सिंपल. 10 joules ले लेता है, 10 joules रिटर्न कर देता है. 10 joules अगेन इट विल टेक, अगेन इट विल रिटर्न बैक. तो नेट जीरो. रजिस्टर वैसा नहीं है. रजिस्टर क्या है कि लगे continuously accept करते ही लेता है. So it will continuously accept the energy of the resistor. We say dissipate. Dissipate means खा लेता है. थोड़ा I know some little bit Hindi, maybe you should try to understand. Means it will convert electrical energy into heat energy. Dissipate means और एक बार दिया तो रिटर्न नहीं आता है. तो एक बार जब सोर्स एनर्जी रेजिस्टर को दे दिया तो रेजिस्टर क्या करता है, उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. सो इट विल नॉट रिटर्न बैक. दिस व्हाट द डिसिपेशन मींस. कैपेसिटर में क्या होता है कि लगे इट विल टेक एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी में कन्वर्ट करता है. फिर अगेन इट विल कन्वर्ट बैक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द सोर्स एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इंडक्टर इट विल टेक इलेक्ट्रिकल, यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. अगेन मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी विल बी कन्वर्टेड बैक टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो यहाँ पे नेट पावर कंजम्पशन बाय इंडक्टर विल बी जीरो. मीन्स लेन देना है यहाँ पे लेना है देना है, लेना है देना है. यहाँ पे क्या है कि ओनली रेजिस्टर लेना है को व्हाट वी से द डिसिपेशन. प्लीज डू adjust with my Hindi because most of them requested sir थोड़ा बहुत हिंदी में पढ़ाओ. So I'm trying a lot. If you are not comfortable with Hindi, just put comments. Okay, I'll stop it or I'll try to improve it. Please do share your feedback. So what is the conclusion now? Both the statements are wrong. Both the statements wrong. So we'll pick up the third statement. Both the statement 192 are false. Okay, fine. It's very good question. सर इसके लिए लगे व्हाट इज द मेथड सर, लाइक ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल ना. फर्स्ट आपको पढ़ना चाहिए ना. ये इधर उधर वीडियो देखो तो कुछ भी फायदा नहीं.
सीधा जाके तुम एसी सर्किट ले लो, पहले थ्योरी पढ़ो। अभी भी तो कितना 50 दिन 50 दिन बाकी है। एवरीडे वन चैप्टर रिवाइज, 30 दिन में हो जाता है कंप्लीट। तो रिवाइज ऑल theory, then daily read formulas, then solve previous year Q. That'll be more than enough. Huh? Unnecessary, don't waste time seeing this, that. Read the theory, understand it, revise all formulas, finish off. No need to watch any of the videos. Huh? Directly, you're going to get a better rank. Okay, kids, we'll take the next question. Given below are two statements. When the frequency of AC source in a series LRC circuit increases, the current in the circuit first increases, attains a maximum value, and then decreases. See, reading question very important. It's a skill which you have to develop. Means we have to be alert. LCR, okay, LCR series circuit, something related to resonance. In a series LCR circuit, the value of power factor at resonance is 1. So directly we will take help of the resonance phenomena. Resonance, you should remember, ये सर्किट तुमको याद रहना चाहिए। रेजोनेंस में सोर्स और रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों सीरीज में रहते हैं। और syllabus is only series resonance. Parallel resonance, no need to prepare. I'll give instruction. Parallel resonance, no need to prepare. Prepare only series resonance. This is a part of syllabus. फाइन। तो रेजोनेंस में क्या है कि दिस इज द सोर्स, यहाँ पे सोर्स और रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों सीरीज में रहते हैं। फाइन, ये तुमको याद रहना चाहिए सर्किट। देन वी हैव वन कर्व। यहाँ पे आपको एक रेजोनेंस का कर्व मिलता है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस रेजोनेंस, करंट वर्सेस का फ्रीक्वेंसी एक कर्व रहता है। तो पहले एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस करंट इंक्रीजेस, एक फ्रीक्वेंसी के पास करंट मैक्सिमम होता है, हो जाता है, सो दैट विल कॉल इट एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फाइन, देन व्हाट इज दैट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? उसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। एग्रीड? दिस इज द फॉर्मूला फॉर यहाँ पे जो रेजोनेंस, जब रेजोनेंस अगेन अगेन सेम कॉन्सेप्ट। रेजोनेंस में क्या होता है? एट मैक्सिमम, एट रेजोनेंस, ए सोर्स है ना, दिस विल सप्लाई एनर्जी टू सर्क्यूट। ये सर्क्यूट को एनर्जी देता है। यहाँ पे कौन लेता है एनर्जी? द रेजिस्टर। हु विल डिसिपेट एनर्जी? द रेजिस्टर। व्हाट अबाउट इंडक्टर, कैपेसिटर? दे विल नॉट डिसिपेट एनर्जी। ओके फाइन। जब भी रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस मीन व्हाट एक्चुअली हैपेंस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, the frequency of source when it becomes the frequency, resonant frequency of circuit. Resonant frequency of circuit किसके ऊपर डिपेंड होता है? इंडक्टर एंड कैपेसिटर, द L एंड C। दिस इज L एंड दिस इज C। एग्री दिस? सोर्स का फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर सकते। सो आई एम ये सोर्स का फ्रीक्वेंसी मैं इंक्रीज कर रहा हूं एट वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स becomes equal to resonant frequency of circuit, then current in the circuit will be maximum, the total current. Fine. So here the current which is flowing, ये जो current है, this is RMS current, and this current will be maximum at resonance. And उसके बाद this will be an impedance curve. This will be impedance का, एक current का. Okay, agree this? So at resonance, current will be maximum when the frequency of AC source increases. The current in the circuit first increases.
मैक्सिमम अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, फिर बाद में डिक्रीज हो जाता है, देन decreases. Okay, statement 1 is correct. Fine, this is correct. Then we'll come forward. In a series LCR circuit, the value of power factor at resonance is 1. What do you mean by power factor? Power factor ka, we will draw a triangle, impedance triangle. Impedance triangle, this is R, this is XL minus XC, and this is Z. यहाँ पे आपको तीन ट्राइंगल मिलेंगे इसी में, एक वोल्टेज ट्राइंगल, इंपिडेंस ट्राइंगल और एक पावर ट्राइंगल. हम जो बात कर रहे हैं आप नो इंपिडेंस ट्राइंगल प्लॉट कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड लाइक इंपिडेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड लाइक ए रिएक्टेंस. So how you define power factor? Power factor cos phi is equal to R by mod of Z. R by. So what is the value of Z? Z equal to कितना? Impedance का A हो गया XL minus XC whole square. This is the formula for impedance. No? Then at resonance, what happens? At resonance, जब resonance हो रहा है सर्क्यूट में, XL will become equal to XC. इसी फॉर्मूला से this equation got derived. Agreed? So then at resonance, the value of Z कितना होगा? R, because XL minus XC will become 0. So Z equal to, now Z equal to R, it will become, substitute here RZ. Then how much power factor? Power factor equal to 1. Cos phi को we are giving a better name. इसको एक अच्छे नाम से बुला रहे हैं, पावर फैक्टर. एट रेजोनेंस इज 1, सो पावर फैक्टर का वैल्यू कितना हुआ? 1. So this statement 1 is correct. So both statement 1 and 2 are true. And then, so you look at the, so like a statement 1 is correct, but statement 2 is true. So A nahi hoga. Statement 1 and 2 are false. This is not there. Statement 1 is correct, but statement 1 is false. तो यहाँ पे वो दोनों सही है. So we take the key 3. We take the next question. Again. As per the given graph, choose the correct representation of curve A and B, where X equal to reactance of pure capacitive circuit connected with AC source. XL is reactance of pure inductive circuit connected with AC source. R equal to impedance of pure resistive circuit connected with AC source. R, impedance of LCR series circuit. यहाँ पे हम तीन सर्किट प्लॉट करेंगे. Okay, यहाँ पे, so now we will plot the different circuits. Impedance x एक्सिस में, y एक्सिस में क्या है? इम्पिडेंस है. यहाँ पे आपको इम्पिडेंस है. x एक्सिस में क्या है? फ्रीक्वेंसी. और ये जो कर्व दिखा रहा है, सो एक कर्व है, कर्व ए, और दूसरा एक कर्व भी है. कौन से एलिमेंट्स को ये रेफर हो जाता है? मीन्स एक कर्व है, इंडक्टर है या कैपेसिटर है या रेजिस्टर है. कर्व भी इंडक्टर है, कैपेसिटर है या रेजिस्टर है. आई थिंक यही पूछ रहे हैं. और इम्पिडेंस. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस वन? प्योर कैपेसिटर. यहाँ पे कैपेसिटर हम कनेक्ट कर लेते हैं. देन XC इक्वल टू how much it is? 1 by 2 pi FCM. अगर तुम इंडक्टर कनेक्ट कर लिए तो XL इक्वल टू 2 pi FL. सर ये XC क्या होता है? What is the meaning of XC? XC is the reaction. Reaction is different than resistance. रिएक्शन में क्या होता है कि फेज एंगल इंट्रोड्यूस हो जाता है वोल्टेज और करंट में. देयर बी सम
phase angle will be introduced between the current and voltage. In the resistance open, there will be a opposition to the flow of current. Whereas in the reactance, what it will do? It will introduce some phase angle and also decrease the flow of current. Resistance will only decrease the flow of current. What about the reactance? It will decrease the flow of current and also will introduce phase angle. Capacitive reactance, what it will do? It will make the current to lead voltage. Inductive reactance, it will make current to lag the voltage. Resistor, current and voltage will be increased. Okay, these are the problem. Next, again, one more resistor ka le lenge. So this is the resistor source. Then here also current will flow, and what is the current? Current I equal to V by R. So as voltage increases, current will increase. Next, इसके बाद is telling there is a LCR circuit also. A inductor है, यहाँ पे inductor, capacitor, resistor, and this is the source. No, all the values. यहाँ पे current, impedance, we will say the impedance. Impedance बोले तो कितना? Z equal to R square XL minus XC whole square. इसके बाद what is Z is equal to? Z further यहाँ पे हम लिख सकते हैं Z equal to R square. XL कितना? 2 pi FL. XC कितना? 2 pi FC. ये जो प्लॉट है हम what is this plot? First we'll identify. A capacitor तुम देख लो, capacitor as a frequency increases, capacitance reactive capacitance should decrease, no? Reactance, this will call reactance, capacitive reactance. Frequency increases, reactance should decrease. And a जो equation है, this will represent rectangular hyperbola. So curve A will represent capacitive reactance. Okay, fine. यहाँ पे A है ना, X. Okay, fine. Then afterwards, यहाँ पे ले लो XL, inductive reactance. It directly increases with frequency. अगर frequency increase हो रहा है तो inductive reactance will increase and directly proportional straight line passing through origin. I think this particular graph will satisfy. और यहाँ पे तुम frequency increase करो, resistance will not change. Resistance is independent of frequency, whereas XL and XC depends on frequencies. Impedance depends on frequency. तो tell me like आप कौन सा ऑप्शन ले लेते हैं? ये तो एक कर तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है और बी इक्वल टू एक्सएल, एक कर्व भी तो इट इज सेटिस्फाइंग द इंडक्टिव रिएक्टेंस का इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है. सो देयरफॉर ऑप्शन डी वर्टपेन और ऑप्शन 4 विल पिक अप. दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. सो की विल बी 4. तेरी आपको पढ़ना है यार, यू हैव टू रिवाइज. कुछ भी नहीं, नथिंग, वेरी सिंपल. एसी सर्किट ओपन कर लो बुक और पढ़ो बस, जस्ट बेसिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये आरसी सर्किट क्या होता है, आरएल सर्किट क्या होता है, देन व्हाट डू यू मीन बाय इंपेडेंस. जस्ट समझ लो यार, स्मॉल स्मॉल थिंग्स है. ये समझने के बाद देन टेक द प्रॉब्लम्स. अपने आप खुद कर सकते हो तुम. No need of any motivation, nothing. Don't waste time here and there watching this and that. Start reading, that's all. Finish or no other. Very simple. You want rank, read it. Reading is the only thing which will help you. Inspiration, oh, either, huh? Will not work. जितना भी इंस्पिरेशन ले लो, बिना 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 ये फॉर्मूला, बिना इसका कॉन्सेप्ट, इसका आइडिया से क्या तुम एक क्वेश्चन कर पा सकते हो? कोई तो भाई रहने दे यार. Let him, whoever the best person will inspire you. You cannot solve this problem without knowledge. So for exam, what is essential?
नॉलेज इज एसेंशियल. नॉलेज कहां से आता है? पढ़ने से आता है. सर पढ़ रहे हैं फिर भी बोल रहे हैं, देयर इज अ नेचुरल. हम पढ़ रहे हैं बोलने के लिए. सो पढ़ते जाओ, 2-3 बार अपने आप प्रॉब्लम्स करते जाओ, थोड़ा 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 याद याद हो जाता है तुमको. फाइन. So you have to prepare things. So we'll take the next question. No. Fourth question. Maximum power is displayed in circuit containing an inductor, capacitor, and a resistor connected in series with an AC source when resonance occurs. Maximum power is displayed in circuit containing pure. Okay, पहले statement का. Second statement का maximum power displayed in circuit containing pure resistor due to zero phase difference due to zero phase difference between current and voltage. डायरेक्टली वी विल ड्रॉ स्टेटमेंट वन का एक सर्क्यूट ले लेंगे. दिस इज द इस टेलिंग. यहाँ पे आपको इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है. दिस इज सोर्स. यहाँ पे एल सी एंड दिस इज आर. When resonance occurs, this is a curve. Okay, fine. And this is a current का है, and this is the x-axis will be resonance frequency, and this is the resonance frequency. Resonance frequency depends on what? 2 pi under root of LC. Maximum power is dissipated. Power dissipation depends on what? Who will dissipate power? Only the resistor will dissipate power. Then what is the power dissipation? That depends upon current. And we know already the basic concepts. Power factor will be maximum at resonance, no? And how much here equal to power factor? Equal to 1. And at resonance, what is the average power dissipated formula? Or in general, in AC circuit, there is a formula. VRMS equal to IRMS cos phi. Agreed? At resonance, what is the power factor? Equal to 1. So VRMS, IRMS into 1. Or VRMS equal to IRMS into R into IRMS. So this is IRMS square R. At resonance, what is the maximum power dissipated? Equal to IRMS square. And at resonance, current will be maximum. So definitely the power dissipation is maximum. So therefore this statement 1 is correct. Maximum power is displayed in circuit containing pure resistor due to zero phase difference between current and voltage. यहाँ पे हम और एक सर्किट ले लेंगे, एक रेजिस्टर, प्योर रेजिस्टर मीन्स यहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर कुछ भी नहीं रहता, ओनली सोर्स एंड रेजिस्टर. देन यहाँ पे करंट IRMS. So power dissipation, applied voltage VRMS. What is the power dissipated? VRMS into IRMS. And apply Ohm's law, VRMS equal to IRMS into R. So kitna hua now? IRMS square into R. So this is the average power dissipated. And what is voltage and current? They'll be in phase. अगर आप तुम across resistor का curve ले लो, this is the voltage, this will be the current का curve, and both will be in phase. A O VRMS and A O current का. And if you check it, both are in phase. Both are in phase. So therefore now यहाँ पे भी maximum power dissipation will be there. Okay, agree this. So this statement also correct.
So what will pick up? Option 2 ले लेंगे. Agree this? Huh? एक what he has done is यहाँ पे सीरीज रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट 1 है. स्टेटमेंट 2 में he has directly asked about the pure inductor connected to AC source, then who will dissipate power? Only resistor. यहाँ पे भी कौन dissipate करता है? Only resistor at resonance. कैपेसिटर इंडक्टर पावर ही नहीं डिसिपेट करता है. दे डोंट डिसिपेट एनी पावर. यहाँ पे जो भी डिसिपेशन होता है वो रेजिस्टर वजह से होता है. एग्रीड सर. लाइक फाइन सर, लाइक ए मैक्सिमम पावर का आप जस्टिफिकेशन कैसे करते? मैक्सिमम पावर डिसिपेट इन सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टर ड्यू टू जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. ये थोड़ा बहुत लिटिल बिट ambiguous we can say, because कब आप मैक्सिमम बोलते हैं? जब वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है. Then but we know what is the at all the time what is the power? IRMS square. Is it like that? No. Instantaneous power will be increasing and decreasing. Agreed? Instantaneous power hai, oh, it will vary with the time sinusoidally. Then he's asking about that maximum power. Fine. In exam I think it's all about you have to think just to with a simple basic idea, sir. You should not confuse yourself. Sir, what is maximum power? यहाँ से सर ओके मैक्सिमम पावर यहाँ पे है. पावर डिस्पेशन इंक्रीजेस बिकम मैक्सिमम देन डिक्रीजेस. ओके सर, इसको मैक्सिमम. यहाँ पे सर आप कैसे जस्टिफिकेशन करते हैं मैक्सिमम पावर? द एवरेज पावर ओके फाइन कांस्टेंट, बट इंस्टेंटेनियस पावर इन प्योर रेजिस्टर सर्किट विल बी वेरिंग विद द टाइम and at one instant will be maximum. I think justified, no? Okay, fine. Maximum negative सोचना बंद करो. Maximum think positively. Maybe out of 25 question, one question may be error, that too like out of like a 5 or 6 shift, maybe what happened 1 or 2 questions out of 6. So not like in every paper 10 questions will be error. Not like that. So definitely what happened, we should mold our thinking so that we should not think negatively. Unnecessary what happened, you should not think negatively and lose marks here. We'll take the next question. Okay, like a kids, like if you are not comfortable with the Hindi, please do message in the YouTube so that what happen, I'll carry on with the English. Or if you are comfortable with the Hindi, little bit here and there, English, what you can call Hindi plus English, I'll continue. With the time, I'll try to improve. But if you are not comfortable with this Hindi, added little bit, added Hindi in English, no? So you can just comment it. So next video, I'll see that I'll stick on to only Hindi, only English. Fine. I'm just doing experiment. Now we'll take the 5th question. A series combination of resistor 100 ohm, inductor of inductance 1 ohm, 1 Henry, and capacitance is connected to an AC source. The quality factor of the circuit will be, yeah, little bit some. There is no necessity for you to draw the diagram. मैं आप लोगों को explain, understand होने के लिए diagram डाल रहा हूँ. बाकी आप एग्जाम में डायरेक्टली विथ फॉर्मूला से you have to start thinking. यहाँ like this is the IRMS, this is the VRMS, what we applied. It's asking power factor. Power factor impedance triangle draw करो. This is a series LCR series circuit. XL minus XC. This is a power. This is impedance. I think this is an impedance triangle. Then power factor हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन करते हैं. Cos phi is equal to R by mod of Z. The quality factor. Quality factor, I think it's deleted for the JEE Mains.
There's a 2003, but 2004 they've deleted. So for JEE Mains, what happened for 2004? I think it's not available. There's a 2003, so therefore it has come. Okay, let me. I thought power factor, quality factor push. What's the formula for quality factor? Where do quality factor will come? Series resonance में. Fine. So with the help of quality factor, what we can calculate? We can calculate the resonance phenomena in a very systematic way. No, the quality factor. This will resonance curve. Let this be RMS current और a frequency. This is resonance frequency. यहाँ पे आपको bandwidth मिलेगा. This is F naught. This is a bandwidth. These are cutoff frequencies. F1 and F2. Quality factor, we can also define this as quality factor. Symbol quality factor का symbol Q है. So this is what typical standard symbol we use. This is defined as resonance frequency by bandwidth, or F naught by delta F, or F naught by F2 minus F1. अगर तुमको यहाँ ग्राफिकल क्वेश्चन कुछ मिलेगा तो take help of this. So there is nothing called any frequency information. Fine. F naught, F naught, F naught, we know it. हमें F naught पता है. So what is F naught? F naught equal to how much? Resonant frequency of circuit 1 by 2 pi under root of LC. So हमें F naught पता है. Bandwidth we don't know. Okay, that we can F2 minus F1. This called as upper cutoff. This called lower cutoff. Okay, this bandwidth we have another alternative formula. Quality factor is also defined as 1 by R root of L by C. Directly formula is there, substitute value of R 1 by 100. Inductance 1. Capacitance कितना 6.25 into 10 to the power of minus 6. So यहाँ पे तुम 1 by 625 10 to the power of 8. 10 to the power of 400 into 25. Okay, calculation. Then this will become 24. It will be. इसका कुछ यूनिट नहीं रहता है. So this is a deleted for deleted syllabus or deleted topic. Quality factor not there. Deleted topic for JEE Main 2025. Finish, okay? So no need to bother. Just straight away now, there's no need to do any experiment. Just say goodbye to this topic. It will come in series resonance. Okay, next we'll take an oscillating LC circuit consists of 75 milliamp inductor and 1.2. The maximum charge is 2.7. The maximum current in the circuit will be. I think this is based on LC oscillations. So आपको थोड़ा याद दिला दूं. This is the inductor. Initially यहाँ पे charge Q0 minus Q0 capacitance N. Maximum charge हमें पता है. So he's asking the maximum current. At one instant, the current through the inductor circuit will be maximum. Okay, fine. So what is the expression for this current? I is equal to omega root of Q naught square minus Q square. SHM ka formula similar to that. X equal to, the formula will be X equal to omega root of A square minus X square. Then maximum current is asking. Maximum current will come when Q is 0. Current will be maximum.
then this will become omega Q naught. What is omega? Omega value. Omega will be 1 by root LC. Okay, fine. So directly omega will be 1 by root LC, and this is equal to Q naught. Q naught value 2.7 into 10 to the power of minus 6 root LC. L will be 75 into 10 to the power of minus 3. 1.2 into 10 to the power of minus 6. So all this will get maximum current will be 9 milliampere. Is asking 9 milli यहाँ पे है, so यहाँ पे 9 रख दो. So what is this concept for LC oscillations का? It is little bit EMI, electromagnetic induction chapter also it is related. From there only this topic has come. The frequency of oscillations. यहाँ पे charge and current will be oscillating, and the equation for charge will be Q equal to Q naught cos omega t. Current का equation Q naught omega sin omega t, where omega equal to angular frequency of oscillation 1 by root LC. Then the charge and current will oscillate, will vary harmonically with the time. And there's a one formula, sir. A very simple question. If you know the theory and no formulas, then you can solve. Otherwise, not possible. Once again, read LC oscillations. Just small idea. The charge and current will oscillate. What is the basic idea of this one? Charge and current will oscillate in circuit. Based on that particular basic formulas, it is being asked. That you should have known that maximum current. Maximum current, when do it occur? When Q equal to 0. I wrote it and I'll write it here. When Q equals 0, the current will be maximum. Okay, fine. This will happen when Q equals 0. Maximum current. Okay, fine. Symbols. Could take the next question. The capacitance of capacitor 150 micro is connected to an alternating source of EMF. The maximum value of current in the circuit. Directly basics. यहाँ पे capacitor. This is the source. So source क्या है? Like a maximum value का source 36 sin और angular frequency कितना है? 120 pi t. Capacitance का value भी पता है हमें. So 150 microfarad. Is asking यहाँ पे maximum current. So what is the expression for a current? Ohm's law. Apply Ohm's law. We are going to use Ohm's law. What is the Ohm's law for capacitor circuit? Voltage drop across capacitor equal to current into XC. Fine. Across inductor का formula will be VL equal to I into XL. Across resistor का I into R. This is very important. Just basic Ohm's law. Ohm's law अगर only inductor रहे तो voltage drop across inductor equal to RMS current into XL inductive reactance. Only resistor रहे तो Ohm's law VR equal to voltage drop across resistor equal to current into resistor. अगर यहाँ पे only capacitor है, then the Ohm's law will be I into XC. What is I? Current through the capacitor. What is XC? The reactance. So what is further XC क्या होता है? Capacitive reactance. It will decrease. It will control the flow of current. यहाँ पे जो current flow हो रहा है उसका value XC के ऊपर depend होता है. Then it will make current to lead the voltage. यहाँ पे तुम if you draw the vector diagram, phasor diagram, current leads the applied voltage. This is what V.
यहाँ पे जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, दिस विल बिकम पैरेलल। यहाँ पे पैरेलल बिकॉज दिस सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर, दिस सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहाँ पे जितना भी ड्रॉप है वो यहाँ पे हो जाता है, इट विल कम हियर द ड्रॉप। यहाँ पे 10 वोल्ट है, सपोज से 36 वोल्ट है इधर, यहाँ पे कितना ड्रॉप होता है 36। then this drop will become, because this will vary with the time, when the drop becomes 20 volt across source, then across capacitor also वही 20 volt रहता है, because they are connected parallel ना। यहाँ पे कितना ड्रॉप है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उतना ही ड्रॉप कैपेसिटर में रहता है एट एनी टाइम। फाइन। व्हाट इज एक्सी? एक्सी इज इक्वल टू, द फॉर्मूला फॉर एक्सी विल बी 1/2 pi fc। सर व्हाट इज एफ? एफ इज ओमेगा इक्वल टू कितना, 120 पाई। सो ओमेगा 2 पाई एफ, तो कितना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको 60 हर्ट्ज। और यू कैन ऑल्सो राइट एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा इज दिस वन, ओमेगा इज दिस वन 120 पाई, एंड हमें सी वैल्यू भी पता है। देन वी कैन सर्च फॉर मैक्सिमम करंट। ओके देन व्हाट इज वी? वी का वी का इक्वेशन यहाँ पे है 36 साइन ऑफ 120 पाई टी। करंट एक्सी वैल्यू विल बी 2 पाई, और से ओमेगा सी ले लो, then this will be I equal to 36 omega c sine of 120 pi t। कौन सा वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम? दिस क्वांटिटी विल कॉल इट एज मैक्सिमम, नो? इसको ही हम मैक्सिमम बोलते हैं इक्वेशन, because when sine 120 pi t becomes equal to 1, अगर a complete this one becomes equal to 1, then जो करंट फ्लो हो रहा है, then this is the maximum current। तो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इक्वल टू? मैक्सिमम करंट यहाँ पे आपको 36 ओमेगा एंड सी। 36 ओमेगा वैल्यू यहाँ पे है 120 पाई। कैपेसिटेंस का वैल्यू 150 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, सो लाइक 10⁻⁻4, again 12 into 36, everything we can simplify it। The maximum value of current in the circuit is approximately, पूछ रहे हैं, you have to do calculation। 15 into pi will be 3.14, pi का वैल्यू अप्रोक्सीमेट हम 3.14 या 3 भी ले सकते हैं, इट विल कम 36 into 12 into 3 into 15 into 10⁻⁻4। This will come approximately, you have to, यहाँ पे तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ता है एग्जाम में, there's no other choice। So this will come 19440 into 10⁻⁴. 1.944 will come. This will be approximately 2 ampere। यहाँ पे यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ना, वो लाइक अप्रोक्सीमेटली पूछ रहे हैं। So not like exact 1.94, we can approximate to 2 ampere। This will be correct option। सर इतना कैलकुलेशंस, जे मीन्स बहुत सारे प्रॉब्लम है यहाँ पे, आपको मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, यू शुड बी वेरी वेरी फास्ट। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर with purely resistive load operates at 12 kilovolt on the primary side. It supplies electrical energy to a number of nearby houses at 120 volt।
The average rate of energy consumption in the houses served by the transformer 60 kilowatt. The value of road resistance, resistive load RS required in the secondary circuit will be. Transformer. ओके नो विल यहाँ पे हम सर्क्यूट ड्रॉ कर लेंगे. ऑपरेट्स ऑन द प्राइमरी साइड. यहाँ पे प्राइमरी का वोल्टेज कितना है 12 किलो वोल्ट. एग्जाम में इस डायग्राम पर जरूरत नहीं. ऑल दिस आपके दिमाग में इट्स बी देयर. इट्स बी देयर इन योर माइंडसेट. Imagination should be there. And this is the resistive load. RL. Then the value of also served by the transformer 60 kilowatt. Transformer का power कितना है 60 kilowatt. Then here it will have some primary current. Here यहाँ पे आपको secondary current. यहाँ पे voltage drop कितना चाहिए आपको 120 volt. Then in transformer, the power in the primary should be equal to secondary. And this is the secondary voltage and this is the primary voltage. Fine. The resistive load required is asking to get the value of this. There's a one basic circuit. We'll apply the Ohm's law. यहाँ पे जितना भी सेकेंडरी का ड्रॉप है वो सब यहाँ पे रेजिस्टर के में आ जाता है because they are in parallel. No, the drop across this secondary, it will drop across the resistor. What all the drop across secondary, what when it will appear parallel, it will appear across this load because they are connected parallel. This one is a secondary. And this one is primary. And this is called like a load, resistive load. And we know in the transformer, power of primary should be equal to power of secondary. Then if they ask you anything, VP into IP, this should be equal to VS into IS. Agreed. Then we know what is the power, 60 kilowatt. Is asking to get the value of RL. So then the power in the secondary should be equal to IS square RL or BS square by RL or equal to VS into IS. हमें क्या चाहिए RL because see we can you can also find out IS. I think this will become lengthy. जरा you have to be alert here. What is unknown thing? आपको resistive load के बारे में पूछ रहा है. How much is the resistive load? आपको क्या क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन है. We know secondary voltage 120 volt. And secondary power also we don't know. We know it. So which formula to be used? अगर आप ये use कर रहे हो, then we don't know IS. Again you have to calculate first IP, then IS, then this one. Lengthy, no? That I think this formula will be more suitable. This formula will be more suitable. Let me use that one. This will be PS equal to what is the power? This will be 60 kilo. VS कितना 120 square. Then RL. RL equal to 120 into 120 by 60 into 10 to the power of 3. 12 into 12 into 6 into 10 to the power of minus 2. 6 1 ja, 6 2 ja. Then this will become 24 into 10 to the power of minus 2 ohm or 240 milli ohm. Transformer, very, very, very simple. हाँ? कुछ भी नहीं, just you have to आपको ये सर्क्यूट याद रखना पड़ता है.
ट्रांसफॉर्मर विल ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। यहाँ पे जितना भी पावर है वो सेकेंडरी को, यहाँ पे जितना भी प्राइमरी में पावर है इट विल गेट ट्रांसफर टू द सेकेंडरी। फिनिश श्योर। देन यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम लाइक व्हाट वी आर डिस्कसिंग यहाँ पे। सो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि लाइक वीएस विल बी लेस देन वीपी। यहाँ पे देखो वीपी कितना है, 12 किलो वोल्ट है। स्टेप डाउन में 120। स्टेप डाउन अगर वोल्टेज घट रहा है, कम हो रहा है, स्टेप डाउन from 12,000 volt it has become 120 volt, so this will become step down transformer. What is a step up transformer? Step up transformer में यहाँ पे कम वोल्ट रहता है, यहाँ पे सेकंड में ज्यादा रहता है। Agree this? और व्हाट अबाउट करंट? प्राइमरी में करंट, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी में करंट कम रहता है, सेकंड में ज्यादा रहता है। These things try to make observation very important. A small topic, two formulas are there. Okay, fine, you can manage it. We'll take next question ले लेंगे। Okay, this completes your JEE Mains। कौन सा शिफ्ट का? अप्रैल शिफ्ट का। So these are the questions that are asked in the April shift. So this completes your April shift 2023 alternating current। देख लो तुम्हें कितना फॉर्मूलास, वेरी सिंपल 6 और 7 फॉर्मूलास आए, इसी के ऊपर सभी फॉर्मूलास रिवॉल्व हो रहा है। Just only have to revise these formulas, nothing is there. So once again I'm requesting to all students, please like kids, पहले तुम पढ़ो, एक बार दो बार पढ़ो, फॉर्मूला याद करो, आके प्रीवियस मीन्स सभी करने का जरूरत नहीं, just last 2-3 years. Okay, there'll be sufficient, now time both come in, or select some each and every one topic, one question, you do it like that, you have to revise. Fine? Okay, now tomorrow I'll bring the April shift. This one will take the 2023, the January shift will discuss the problems. Okay, thank you all of you.